Good morning, students. Just let's see the information of the lecture first. Subject English, class 8th. Essentials of English grammar we are reading. And this is chapter 12, conjunctions. And this is lecture number 1. So just be concentrated, students. Defining a conjunction. What is actually a conjunction? The definition of conjunction is conjunctions are words used to join other words, group of words or sentences. They are called linkers or connectors also. Now understand students, जब कोई भी वर्ड दो शब्दों को जोड़ेगा, टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि दो शब्दों के ग्रुप को जोड़ेगा या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शंस. और कंजंक्शंस को जो है लिंकर्स भी बोला जाता है, लिंकर्स भी मीनिंग सेम होता है और कनेक्टर्स भी सेम होता है, राइट. दीज आर द डिफरेंट वर्ड्स बेसिकली. सो लेट्स सी एंड, बट, और. Let's study these examples. She set the alarm and went to sleep. He typed the report and sent it to the newspaper. I tried my best, but I could not open the cupboard. The rooms are big, but they are not airy. You can pay cash or you can give a bank draft. Shall we walk? Or do you want to take a bus? So see children, the words which are in bold here in the sentences are conjunctions. Though these are explained further, आगे देखो इनकी explanation दी गई है जो ये words sentences लिखे हुए हैं. We use and to join similar facts or statements. जब हम similar facts और statements को जोड़ते हैं, that is there we use and conjunction. See the example. She set the alarm and she went to sleep. दो सेंटेंस है स्टूडेंट्स, हालांकि सब्जेक्ट कॉमन है दोनों सेंटेंसेस का, बट सेंटेंसेस आर टोटली डिफरेंट दोनों के दोनों, बट सिमिलर है. सो इसलिए हमने यहाँ पे एंड कंजंक्शन यूज किया है. शी सेट द अलार्म एंड शी वेंट टू स्लीप. He typed the report and sent it to a newspaper. And similar statement is there, that's why and is used. So I just need to understand before using any type sort of word that should be a bit similar. Right, everyone? We use but to express opposition or contrast between two statements. Opposition means हम एक दूसरे के विपरीत पाते हैं दोनों sentences को या फिर जो भी statements है. जैसे कि first statement है I tried my best but I could not open the cupboard. ये बिल्कुल कंट्रास्ट हो गया, अपोजिट हो गया फर्स्ट वाले, तो इसलिए हमने यहाँ पे but यूज कर दिया, राइट. अगर ऐसा होता I tried my best dash and I opened the cupboard, तो बन जाएगा and. अगर अपोजिट हो गया तो बन गया but, राइट. ये सेंटेंस you will read it. If I had tried my best, I should have opened the cupboard, but I could not. Means again opposition is there, यानी कि विपरीत जो है. He is rich dash is not contented, but is not contented क्योंकि rich तो है लेकिन satisfied नहीं है, इसलिए जो है वहां पर हमने but conjunction को यूज किया है दोनों statements को जोड़ने के लिए. We use or to express a choice between two alternatives. दो में से जब हम किसी एक की choice देते हैं तो वहां पे हम लोग or यूज करते हैं. You can pay cash
और यू कैन गिव अ बैंक ड्राफ्ट, राइट? या तो कैश पे करो या फिर बैंक ड्राफ्ट दे दो, चॉइस इज योर्स। जब चॉइस की बात करेंगे तो वहां पे हम और कंजंक्शन को यूज करते हैं। यू कैन डू ईदर ऑफ द टू, दोनों में से कोई भी एक अप्लाई कर सकते हैं। कैन यू डू इट योर सेल्फ और डू यू नीड एनी हेल्प? कैन यू डू इट योर सेल्फ, क्या तुम इसको अपने आप कर सकते हो या फिर तुम्हें किसी की जरूरत है? चॉइस। So ultimately, when you talk about the similar phrase, you use the conjunction and. When you use the expression of opposition or contrast, you use their what. वहां पर हम लोग but use करते हैं. And when we have the choice, there we use or. Exercise 1. Join these sentences using the conjunctions given in the brackets. So see children कि हमें जो है conjunctions को use करना है. किस तरह से हम इन कंजंक्शंस को यूज करते हैं? देयर आर गिवन टू एग्जांपल्स ऑफ ईच this sentence. I'll do one for you from the examples and two from the real exercise. So let's see the first sentence. The movie does not have a good story, full stop. It does not have good music. अब हमें इसको neither nor से जोड़ना है, right? So the movie has neither a good story. neither में दोनों चीजें आती हैं स्टूडेंट्स, नोट भी आ गया और सिंगुलर फॉर्म भी आ गई. The movie has neither a good story nor good music, right? So ये देखो कि हमने क्या क्या कट किया और किस तरह से हमने इसको पुट किया. That's very important here students. The words which are not important in the sentence, we cut it to frame properly sentences, right? So the second example, you all will do it yourselves. Let's go to the exercise sentences. See the third example. It was extremely hot inside, full stop. We continued to work. So bracket में हमारे पास जो है but है. It was extremely hot inside as it is, but we continued to work. When you have single word as a conjunction, there are so less chances, there are a few chances to deduct the words. Otherwise, the words of the sentences or the statements remain same. So see the first sentence. We wrote several letters to the director of education. Full stop. There was no response. So see यहाँ पर सिर्फ हमें एक ही वर्ड को इनपुट करना है, दैट इज बट एज ए कंजंक्शन. सो आप क्या करोगे, एजुकेशन के बाद जो फुल स्टॉप है उसको रिमूव करके वहां पे बट लगा दोगे तो क्या बन गया? We wrote several letters to the director of education, but there was no response, and T of there will be small. Right, everyone? See the next sentence. I will do two sentences for you. Rest of the sentence, you all will do it yourselves. And the next day, you will get the answer key. With that, you will tally and complete the exercises. All right, see the next. Did she break the national record? Interrogation mark. Did she break the world record? So sentence banega, did she break the national record or the world record? Or the world record. Choice की बात आ गई यहाँ पर. So did she break cut हो जाएगा क्योंकि वो already first sentence में आ चुका है. So interrogation mark will be at the end. Did she break the national record or the world record? Rest of the sentences you all will do it yourselves, children. Let's go to next. So because result cause. So result के लिए use होता है और because जो है cause के लिए use होता है. Let's study these examples. I wasn't feeling well, so I took a day off. देखो रिजल्ट हो गया कि मैं अच्छा नहीं कर रहा महसूस कर रहा था इसलिए मैंने दिन का ऑफ ले लिया. The car broke down, so we had to walk to the school. We respect her because she is very sincere. There were no buses because the drivers were on strike. That was the cause basically. Compare these two sentences.
He liked her, so he married her. वो उसको पसंद करता था इसलिए जो उसने उससे शादी कर ली. He liked her because she was very sincere. So you just need to understand. First one is showing the result. Second one is showing the cause. So suggests the result of something. Because suggests the reason of something. So see children, this is what we need to be a particular sure. So to second exercise, join these sentences using the conjunctions given in the brackets. I will do first sentence for you. The rest you will do it yourselves. This two sentence of exercise and first of this example. See the example. The air was polluted. We could not even breathe comfortably. So that. So को एक स्टेटमेंट में पुट करना है और दैट को एक में पुट करना है ताकि एक सेंटेंस प्रॉपर बने. सो सेंटेंस देखो एग्जांपल तुम्हारे सामने है. द एयर वाज सो पोल्यूटेड दैट वी couldn't even breathe comfortably. Right? See the next one. The iron was a little too hot. The shirt got burnt. As use करना है. तो देखो हमने क्या किया है, जब हम इस तरह के कंजंक्शंस को यूज करते हैं as को, तो आप कई बार क्या करते हो, सेकंड सेंटेंस को फर्स्ट बना देते हो. The shirt got burnt as the iron was a little too hot. Right? So this is what, when you use such type of conjunction as, इस तरह से हम स्टेटमेंट्स को चेंज भी कर सकते हैं. See the first sentence. The picture quality is poor. The signals received from the satellite are weak. So see now, what do we do this, children? Second exercise. अब सेकंड एक्सरसाइज को हम आगे ले आएंगे, सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस को आगे ले आएंगे और उससे पहले सिंस लगाएंगे. सिंस द सिग्नल्स रिसीव्ड फ्रॉम द सैटेलाइट आर वीक, डाउन कोमा, द पिक्चर क्वालिटी इज पुअर. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, सेकंड स्टेटमेंट को पहले ले आएंगे सिंस के साथ. Since the signals received from the satellite are weak. देखो दो स्टेटमेंट्स है, आपको ये जस्टिफाई करना है कि पहले कौन सी आएगी और बाद में कौन सी आएगी. सो पहले सिग्नल्स आए ना, उसके बाद ही पिक्चर क्वालिटी पुअर हुई, तो सिग्नल्स को पहले लेके आएंगे हम, तो बन गया हमारा since the signals received from the satellite are weak, down comma, the picture quality is poor. So ये समझना बड़ा important है children. Which statement falls first, you will use that first, and which comes second, you will use that second. Right? The fuse has blown off. The toaster is not working. So this is what we need to see. Now you see the toaster. अब देखो fuse is blown off, the toaster is not working. So you will write the toaster is not working as the fuse has blown off. Like this, you will put the sentences by joining them with the conjunctions. So right everyone, two sentences we have done. Let's go to next exercise. This is third exercise. You shouldn't blame others since. Now you see ये sentence जो दिया हुआ है इसमें हमें करना क्या है, complete these sentences with ideas of your own for oral practice. ओरल प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमें अपने आप फिल करना है. आप सेंटेंस कुछ भी लगा सकते हो, दैट शुड बी एसोसिएटेड और कनेक्टेड विद द फर्स्ट सेंटेंस. जो सेंटेंस, जो स्टेटमेंट हमारे सेंटेंस में दिया हुआ है, ये उसके साथ जो है ज्वाइन होना चाहिए, उसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए.
फिर हम जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, हाँ भाई दैट्स ओके, राइट एवरीवन। Make sure that you are able to get. Sometime network might disturb us. Just you just need to remain connected so that we don't get a bit confused that we are getting this. So see, you shouldn't blame others since के साथ आप ये सेंटेंस कंप्लीट करना है अपने आप. You have to do it yourselves. When the notebooks will be checked, there you will be told what to put and how to put. Though here in the sentence you should not blame others since के बाद वाला जो सेंटेंस है हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट को एसोसिएट ज्वाइन करते हुए होना चाहिए. सो इसका जो मीनिंग बनता है एक्चुअल में वो क्या बनता है और उसको हम किस तरह से पुट करते हैं. यू शुड नॉट ब्लेम अदर्स सिंस यू आर नॉट गुड इनफ, since you are not discipline abided, since you should look after yourself. Like this, children, you can frame so many sentences which are totally connected to the first statement, right? So let's go to the next sentence. यहाँ पर कोई कंपल्सन नहीं है कि एक ही सेंटेंस आएगा, आप किसी भी तरह का कोई भी सेंटेंस पुट कर सकते हो. दैट शुड बी ज्वाइनिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट. वो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना चाहिए. वो सिमिलर भी हो सकता है, वो तुम्हारा ऑपोजिट भी हो सकता है, चॉइस भी हो सकती है, और इट कैन गो इन द सेम वे, राइट. यू वर सो रूड टू हर दैट, now you see, you were so rude to her that you should not have scolded her. You should not have scolded her. तुम्हें उसे नहीं डांटना चाहिए था. तुम उसके साथ बड़े रूड थे, तुम्हें उसे नहीं डांटना चाहिए था, राइट. यू वर सो रूड टू हर दैट यू शुडंट हैव स्कॉल्डेड हर. You shouldn't have taken money from her. You shouldn't have stolen her book, right? इस तरह से आप सिमिलर स्टेटमेंट्स को पुट करके इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करोगे अपने आप, राइट. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट. सो दैट को हम यूज करते हैं पर्पज शो करने के लिए. लुक एट दीज एग्जांपल्स. दे एडवर्टाइज्ड ऑन टेलीविजन सो दैट दे कुड improve their sales. Take an umbrella lest you should be caught in rain. देखो so that आ गया, lest आ गया. The words in bold letters suggest purpose. ये दोनों जो वर्ड है पर्पस को शो करते हैं, उद्देश्य जिसको हम बोलते हैं. The purpose of advertising, they could improve their sales. The purpose of taking an umbrella, you don't get caught in rain. कि भाई आप बारिश में आए भीगो या फिर आपकी सेल्स इंप्रूव हो जाए. पर्पस था ना उसके पीछे. That's why it is used. So that, in order that, lest suggest the purpose of performing an action. Action को perform करने के बारे में ये use हुआ है. Let's see. They advertised on television so that their sales might improve. कि उनकी sales जो improve हो जाए. Purpose है. They advertised on television because their sales were going down. कारण है. उन्होंने एडवर्टाइज की क्योंकि जो उनकी सेल्स नीचे जा रही थी. दे एडवर्टाइज्ड ऑन टेलीविजन सो देयर सेल्स वेंट अप. और ये रिजल्ट, क्या भाई रिजल्ट क्या है कि भाई उन्होंने सेल इसलिए की, क्या रिजल्ट निकले कि वो सेल जो है अप चली जाए, ऊपर चली जाए, राइट. कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद द आइडियाज ऑफ योर ओन फॉर ओरल प्रैक्टिस. अब इस एक्सरसाइज को भी आपको अपने आप ही कंप्लीट करना है. This is very important exercise. You all have to use your brain. माइंड यूज करना है इसको यूज करने के लिए. हालांकि दो सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं और मैं आपको इस तरह से प्रेजेंट कर रहा हूं दैट इट बिकम्स अ बिट इजियर फॉर यू पीपल टू मेक सेंटेंसेस. वी डिड नॉट कंप्लेन अबाउट द फूड लेस्ट
आप देखो वो इजिली समझते हैं, वी डिड नॉट कंप्लेन अबाउट द फूड। लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। लेस्ट के साथ हमेशा शुड का रिलेशन आएगा। सो इसको समझ के रखना है। देखो वो कहता है डिड नॉट कंप्लेन अबाउट द फूड, लेस्ट हमने कंप्लेंट नहीं किया फूड के बारे में, लेस्ट द रेस्टोरेंट शुड लॉस इट्स लाइसेंस। आप रेस्टोरेंट में फूड खा रहे थे, आपने कंप्लेन नहीं किया, अच्छा नहीं था, तो क्या नहीं हुआ कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई लेस्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई रेस्टोरेंट अपना लाइसेंस खो दे, राइट। और भी सेंटेंस बना सकते हो, घर को लेकर के इसको बनाओ। देखो वी डिड नॉट कंप्लेन अबाउट द फूड, हमने फूड के बारे में कंप्लेन नहीं किया, लेस्ट योर मदर शुडंट गेट अपसेट, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मदर जो है अपसेट हो जाए। हमने इसलिए कंप्लेन नहीं की, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मदर अपसेट हो जाए, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ भाभी अपसेट हो जाए, राइट। लेस्ट योर मदर शुड गेट अपसेट, राइट। शुड के रिलेशन में लेस्ट का यूज होता है। So you will make like this, right? Next sentence. We have employed a night watchman in our colony because, अब यहां पर आपको जो है because जब आ गया तो ये रीजन देता है। We have employed a night watchman in our colony because because thieves or like thefts were going on much, यानी कि चोरियां ज्यादा हो रही थी। उसका रीजन दिया उसने, भाई हमने नाइट वॉचमैन रखा है क्योंकि जो है कॉलोनी में चोरियां ज्यादा हो रही थी, बिकॉज देयर वर सो मेनी थेफ्ट्स, राइट, सो मेनी स्टीलिंग्स ऑफ द थिंग्स, बिकॉज देयर वर थेफ्ट्स इन द कॉलोनी, कॉलोनी में चोरियां हो रही थी, राइट। सो रीजन दे दिया बिकॉज के साथ। इस तरह से आपको क्या करना है, यू नीड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस यू ऑल विल कंप्लीट योर सेल्स। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। ऑल्दो इज यूज फॉर कंसेशन और कंट्रास्ट। ऑल्दो को हम लोग कंसेशन और कंट्रास्ट के लिए यूज करते हैं चिल्ड्रन। स्टडी दीज एग्जाम्पल्स। ऑल्दो इज एन ओल्ड कार, इट डजंट नीड मच रिपेयर। नाउ यू सी एवरीवन, ऑल्दो का एक्चुअल मीनिंग होता है दो, और इसको हम लोग यूज करते हैं हालांकि, यद्यपि, इस सेंस में, राइट। एन ओल्ड कार शुड नीड रेगुलर रिपेयर बट दिस वन डजंट। कंट्रास्ट हो गया। द टीचर डिडंट गिव मी फुल मार्क्स इवन दो देयर वाज नो मिस्टेक इन माय आंसर। टीचर ने जो है मुझे फुल मार्क्स नहीं दिए क्योंकि मेरी जो है इवन दो, अब वो कहता है हालांकि जो है मेरे कोई भी मिस्टेक नहीं थी। इवन दो कंट्रास्ट भी करेगा और कंसेशन भी करेगा। कंट्रास्ट मीन्स विपरीत जाएगा। देयर वॉज नो मिस्टेक बट द टीचर डिडेंट गिव फुल मार्क्स, कंट्रास्ट हो गया, राइट। वी आई डोंट एक्सेप्ट दिस जॉब इवन इफ दे ऑफर डबल द सैलरी। The salary might be double, still I won't accept this job, means contrast हो गया। So we use though types conjunctions to suggest contrast। दो टाइप जो कंजंक्शंस होते हैं हमारे, उनको हम लोग जो है कंट्रास्ट शो करने के लिए यूज करते हैं, राइट। उसके बाद नोट आप खुद रीड करोगे, व्हाट डज इट मीन बाय। अब आ जाओ इफ, जो कंडीशन को शो करता है। लुक एट दीज एग्जांपल्स। इफ द हेडलाइट्स ऑफ अ कार आर वीक देयर माइट बी एन एक्सीडेंट। अगर कार की हेडलाइट्स ऑफ हो गए तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। इफ कंडीशन की बात कर रहा है। if suggests the condition under which an accident may occur. If the child is not vaccinated, it might catch a serious infection. अगर बच्चे को दवाई नहीं दी गई तो बच्चे को जो है इन्फेक्शन हो सकता है। If suggests the condition under which the child might catch a serious infection, यानी कि if जो है हमेशा कंडीशन की बात करता है। It talks about condition always. We use if type conjunctions to suggest condition, और if type जो conjunctions होते हैं ना वो condition को suggest करते हैं। We have already read some if type conjunctions in chapter 6 conditionals, so you can just go back to just read chapter 6 to have a practice of if. Join these sentences using the conjunctions given in the brackets. Exercise 5 students, get your seats. First example,
get your seats reserved in advance, only then your journey can be comfortable. Only if put करना है. So only if कैसे आ गया? Your journey can be comfortable. Last statement को first कर दिया. Your journey can be comfortable only if you get your seats reserved in advance. सेंटेंस की स्टेटमेंट को समझना है. जो पहले आती है उसको पहले लेना है, जो बाद में आती है उसको बाद में लेना है. Right? Your journey can be comfortable only if you get your seats reserved in advance. Next example, he was my childhood friend. He full stop. He deceived me. Deceive means होता है to cheat, धोखा देना. So क्या बन गया? Although means मैंने बताया हालांकि या फिर यद्यपि. हालांकि वो कहता है he is my childhood friend. Down comma he deceived me. उसने मुझे काफी धोखा दिया. Let's come to the first sentence of fifth exercise, children. Fifth exercise के first sentence पर आ जाओ सभी के सभी. We will accept your application. You should fulfill all the conditions provided. अब provided को कुछ करना है, तो इसमें हमें ये देखना है provided कहाँ कुछ कर सकते हैं. Will accept your application first आ गया. Provided down comma करेंगे. Provided you fulfill all the conditions. डाउन कोमा को हटा देंगे. you'll will accept your application provided means होता है बशर्ते. you should fulfill all the conditions, right? so provided बीच में आ जाएगा दोनों स्टेटमेंट्स के. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. he won the match quite easily, full stop. He had been out of practice for quite a long time. अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? even though हमें पुट करना है, तो even though हम पहले लगाएंगे. even though he had been out of practice for quite a long time, comma, he won the match quite easily. So like this we will make sentences, students. Once again I'm repeating the second sentence. even though को पहले लगाएंगे even though, और second statement को ले आएंगे even though he had been out of practice for quite a long time. Down comma he won the match quite easily. Right everyone? So let's see the next. Sixth exercise. Complete these sentences. Complete these sentences with ideas of your own for oral practice. Now you see, what do we find here? This is going to be very easy. Same वैसे ही करना है जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी. ये आपको खुद करनी है. Milk turned sour. मिल्क जो है खट्टा हो गया. Although फिर भी वो कहता है हालांकि we made cheese of it. We made cheese from it. Of it. We made cheese of it. हमने जो है उसका पनीर बना दिया. Right? Milk turned sour. Although we made cheese of it. Like this you will complete. Plants grow big only if you water and take care of them properly. Plants grow big only if you water and take care them properly. Like this you will make sentences yourselves of this exercise. Right? Let's go to next. When, where, as. When time के लिए, where place के लिए, और as manner के लिए यूज होता है. Study these examples. As soon as the bell rang, the children rushed out. When the children rushed out, as soon as the bell rang. Time को बता रहा है. देखो. The driver lost control when he was taking a right turn. When the driver lost control when he was taking right turn. Time को बता रहा है.
यानी कि when जो है टाइम को बताता है. Your bag should be lying where you left it. Where should the bag be lying? Where you left it. Place, where place को show करता है. A sincere person creates goodwill wherever he goes. Where does a sincere person create goodwill? Wherever he goes, place को बता रहा है. We acted as we had been directed. In what manner did we act? As we had been directed. Manner की बात कर रहे हैं. He behaved as if he were worried for us. वो इस तरह से व्यवहार कर रहा था कि वो हमारे लिए चिंतित था. How? और in what manner did he behave? As if he were worried for us. कि वो हमारे लिए परेशान था, हैरान था. So see the seventh exercise. Join these sentences using the conjunctions given in the brackets. First example देखो. I pressed the button. Full stop. Water gushed out of the tap as soon as. So क्या बनेगा? As soon as I pressed the button, down comma, water gushed out of the tap. Let's see the first example, children. The light turned red. Light जो है red हो गई. We had slowed down before that. अब ब्रैकेट में हमारे दिया हुआ है before. So first second statement को पहले कर लो. We had slowed down before the light turned red. राइट हमने इसको स्लो कर दिया लाइट के रेड होने से पहले. अगेन रिपीटिंग. वी हैड स्लोड डाउन बिफोर दैट. वी हैड स्लोड डाउन बिफोर द लाइट टर्न्ड रेड. बिफोर दैट कट हो जाएगा, लास्ट वाला बिफोर आएगा. वंस अगेन. वी हैड स्लोड डाउन बिफोर द लाइट टर्न्ड रेड. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस. Sincere people may go anywhere, they will be respected. So इसका बनेगा sincere people may go anywhere. Sincere people may go anywhere. देखो full stop. They will be respected. So बनेगा sincere people will be respected wherever they go. एक बार और बोल रहा हूं. Sincere people will be respected wherever they go. जस्ट नोट इट डाउन एंड जस्ट टेली के क्या कट हुआ और किस तरह से हमने इसको मैनेज किया. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट. दैट इफ वेदर. इफ और वेदर का सेम कॉम्बिनेशन होता है और दैट. कंपेयर दीज सेंटेंसेस. ही टोल्ड मी दैट ही लाइक्ड द न्यू इंग्लिश टीचर. ही आस्क्ड मी इफ ऑब्लिक वेदर आई लाइक्ड द न्यू इंग्लिश टीचर. शी सेड दैट शी वाज क्वाइट इंटरेस्टेड इन प्रपोजल. She wondered if Sumit could be interested in the proposal. Note क्या दिया हुआ है. As we have already read about if, can suggest condition also. If जो है condition को show कर रहा है and weather also. और that को हम लोग use करते हैं simple statements के लिए. So fill the blanks with appropriate conjunctions. In certain cases, more than one choice is possible. I told you people, more than one choice is possible in the sentence. We should respect all religions. हमें जो है सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ताकि कंट्री डैश द कंट्री में रिमेन यूनाइटेड, के हमारी कंट्री हमारा देश जो है एक बना रही. सो दैट आप लगा सकते हो यहाँ पर. इन ऑर्डर दैट भी लगा सकते हो. वी शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स सो दैट द कंट्री में रिमेन यूनाइटेड. या फिर इन ऑर्डर दैट द कंट्री में रिमेन यूनाइटेड. राइट. Always, next sentence, always look both ways dash you cross the road. अब यहां पर जो है हमें टाइम भी मिल रहा है और कंडीशन को भी शो कर रहा है. We always look both ways before you cross the road या फिर when you cross the road. देखो चॉइस है. Always look both ways before you cross the road या फिर when you cross the road. Right, everyone? So you will complete these all sentences of 8th exercise yourselves. Read exercise 9. Rewrite the sentences using the conjunctions given in the bracket. See the example. 3 coaches got drilled but nobody was injured. Although को put करना है तो although पहले लग गया. Although 3 coaches got drilled, down comma, nobody was injured. अब ब्रैकेट में जो दिया हुआ ना उनको पुट करना है. See this. This lock will open only if you use a code number.
अनलेस को पुट करना है। तो क्या बनेगा, दिस लॉक विल नॉट ओपन, विल के बाद नॉट लगाओगे क्योंकि अनलेस के लिए हमें नेगेटिव शो करना है। दिस लॉक विल नॉट ओपन अनलेस यू यूज अ कोड नंबर, यानी विल के बाद नॉट लग गया और इफ ओनली इफ कट हो गया। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, दिस लॉक विल नॉट ओपन अनलेस यू यूज अ कोड नंबर, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, मेक गुड यूज ऑफ योर टाइम लेस्ट यू शुड रीपेंट लेटर। और के साथ बनाना है, ये लेस्ट शुड के साथ बना हुआ है, और के साथ इसको बनाना है। सो और के साथ इसका क्या बनेगा, मेक गुड यूज ऑफ योर टाइम, मेक गुड यूज ऑफ योर टाइम एज इट इज, फिर लगा दो और यू विल रीपेंट लेटर, लेस्ट शुड को कट कर दो और शुड की जगह विल लगा दो, और you will repaint later. Once again repeating, make good use of your time or you will repaint later. Full stop, done. Next same है, एक बार उसको भी देख लो, make good use of your time lest you should repaint later, if के साथ बनाना है। तो इसका क्या बनेगा, if पहले लग जाएगा, if you make good use of your time, you down comma, if you make good use of your time down comma, you will not repaint later, आप बाद में जो है आपको पछताना नहीं पड़ेगा। So children, this is enough for today's lecture. If any one of you wants to ask any question, I am going to allow you. You just need to raise your hands, then I will unmute you and then you will ask question. So any one of you wants to ask, this chapter is over. Thank you very much for joining today's class. Now there will be discussion of question answers.